بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا كريم أكرمني من الفهم واخرج مظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. गुज़िश्ता हफ्ते हमने दीन पर इस्तिक़ामत और तक़वा परहेज़गारी के सिलसिले में कुछ बातें समाअत की थी। हमने बयान किया था कि 10 ऐसे उमूर हैं, ऐसे खसलतें हैं कि अगर मुसलमान उन खसलतों को अपनाएगा तो इंशाअल्लाह दीन पर इस्तिक़ामत हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। हमने उन 10 में से एक खसलत का तज़किरा किया था, वो है हमावत अल्लाह ताला का ख्याल करना कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। We mentioned last week some of the attributes we need to implement, some of the traits as believers we need to implement in our lives, by which we become strong and firm on our deen. Why is it that today, if we look around in our society, look at ourselves, we find it very difficult, for example, to pray the bare minimum 5 times a day, which is the bare minimum. Why is it very difficult? To abstain from haram, to fulfill the obligations of Sharia is because of these 10 traits, 10 attributes which are missing from our lives. And the first attribute, the first trait, the first khasla which we talked about was to feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah subhanahu wa ta'ala is aware of our actions. Nusi khaslat. What is the second thing that if we were to implement in our lives, then it will be very easy for us to act upon deen. ये दूसरी अलामत या दूसरी खसलत कौन सी है कि अगर इस खसलत को हम अपनाएंगे, है बहुत मुश्किल खसलत, लेकिन अगर हम इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह तो हम दीन के तरफ राग़िब रहेंगे और गुनाह से हम बाज रहेंगे। What's the second? वो है कम खाना. Yes, to eat less. So today's subject inshallah will be about the Islamic, I'm not talking about the medical side, the physical side of the benefits of eating less. I'm talking about the spiritual side, the religious side, the Islamic side as to why it is beneficial to eat less. कम खाने के फ़वाइद कौन कौन से हैं? इमाम ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु ताला हुज्जत इस्लाम अपनी किताब अहल-उलूम में नक़ल फरमाते हैं, इमाम ग़ज़ाली has mentioned, he begins talk about the lusts of the stomach, the desires of the stomach. Yes? फरमाते कि जान लो, he says,
कि तमाम आफात की असल पेट की शहवत है. Yes, the origin of all sins. All the sins are committed in the entire world. He says the root cause is the stomach. Is the stomach. और उसी से शर्मगाह की शहवत पैदा होती है. Through the stomach, you get desires, lusts, yes, of opposite gender. Yeah, to commit haram, to look at haram, many things. और हज़रत सैयद आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश इसी के जरिए हुई. आदम अलैहिस्सलाम was tested through what? Through the forbidden tree. O Adam अलैहिस्सलाam, do not come close to this tree. Yes, Adam अलैहिस्सलाam was tested in Jannah through the test of stomach. और आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया. इसी की वजह से आदमी दुनिया का तालिब होता है और उसमें रग़बत करता है. It is because of filling our stomachs. Yes, the stomach is a fuel for desires and lusts of many wasawis and many bad thoughts. If you were to control your stomach, you'll be able to control your desires and your lusts. And many people, they go towards haram because they cannot control the stomach. Even if it's a full plate of biryani. Yeah? And unfortunately nowadays, mashallah, as we're learn, we go to a restaurant, first we have starters. Few kebabs, okay? And then some samosas we have, by which we already fill our stomach. And then we come to the main meal. Yes, we have the naans, the karais, and the chicken, and the biryanis, and the rice, and all these things. And then on top of that, we have to have desserts. On top of that, at the end, if it's someone's house, you have to have those fruits at the end. And then maybe, if you're lucky enough, you might have some pans at the end. Yes or no? Yes? Allahu Akbar. तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, भूख और प्यास के जरिए अपने नफ्सों के खिलाफ जिहाद करो. Struggle in the way of Allah, spiritually, by suppressing your desires. How? By going against filling your stomachs. Yes? Through hunger and thirst, we can spiritually get close to Allah subhanahu wa ta'ala. और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद शाह फरमाया, क्योंकि उसका सवाब अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना जीतना है. और अल्लाह ताला को भूख और प्यास से बढ़कर कोई अमल पसंद नहीं. Imam Ghazali has mentioned, there is no action, no deeds more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than prolonged hunger and thirst. Yes? Fight your desires. You feel the urge of eating? Yes, eat. I'm going to learn inshallah. But control how much you eat. Yes. और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ला यदखुलु मलकुतु समा मन मलअ बतनह. जो शख्स अपने पेट को भरता है, आसमान के फरिश्ते उसके पास नहीं आते. Angels do not visit those individuals whose vessels, the stomachs are filled with food. Yes. और इसी तरीके से सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इल्बसू वशरबू वकुलू मिन अंसाफिल बुतून फइन्नहु जुज़उम मिन नबुव्वा. लिबास पहनो और आधा पेट खाओ पियो. Yes, अंसाफ निस्फ, half of it. बेशक ये नबूवत का एक जुज़ है. This is part of nubuwwah. This is the sunnah of the Prophet ﷺ. They will never fill their stomachs. Yes. And including me, myself. Okay? We all included, inshallah. Allah give us tawfiq. और सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाहु अकबर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुकुम मंज़िलतन इंदल्लाह अतवलुकुम जुअन व तफक्कुरन.
कि अल्लाह ताला के वहाँ तुम सबसे अफजल वो है जो ज़्यादा भूखा रहता है और गौर और फिक्र करता रहता है. The closest to Allah subhanahu wa ta'ala is the one whose hunger is prolonged, who endures prolonged hunger, and he spends his time in contemplation, in meditation, thinking about akhirah. وَأَبْغَضُكُمْ إِلَى اللَّهِ كُلُّ نَوُومٌ أَكُولٌ شَرُوبٌ और इसमें मुबालगा. Yes, और सबसे बुरा वो है जो खूब सोता है, खूब खाता है और खूब पीता है. And the most detested individual in sight of Allah subhanahu wa ta'ala, who eats the most, who drinks a lot, who sleeps a lot, and who eats a lot. This is our trait. Okay? Now we eat a lot, we drink a lot, and mashallah in winters, we sleep a lot. Well, this is as mentioned last week, the winters is a time that we can wake up 2 o'clock, 3 o'clock easily, pray Salatul Tahajjud, go back to sleep. Yes? But yet, we want to sleep 8 hours, 9 hours, and even more. And I want to mention one narration, narrated by Musnad of Abi Ja'd, radiallahu ta'ala anhu, इसको समाप्त फरमाए कि सैयदा साबित बुनानी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मुझ तक ये रिवायत पहुंची है कि इब्लीस, डेविल, लानतुल्लाह अलैहि, हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहि सलाम के सामने ज़ाहिर हुआ. इब्लीस came in front of Sayyidina Yahya अलैहि सलाम. तो आपने मुलाहज़ा फरमाया कि उस पर हर शय के कुछ कुंडे थे. He had vessels of many things. Iblis was carrying vessels. आपने दरियाफ्त फरमाया, इब्लीस ये कैसे कुंडे हैं जिन्हें मैं तुझ पर देख रहा हूँ? What are these vessels? What have you got in these vessels? उसने जवाब दिया, ये वो शहवात हैं जिनके जरिए में बनी आदम तक पहुंच जाता हूँ. These are vessels of lusts and desires by which I can lure and trap bani Adam, humans. आपने दरियाफ्त फरमाया, he is a prophet of Allah, and yes, he is asking, क्या उनमें मेरे लिए भी कोई शय है? Is there any from these vessels something for me by which you try and trap me? उसने कहा, रुब्बमा शबि'ता फतक़ल्नाक अन सलाह व अन ज़िक्र. यानी कई बार आपने पेट भर कर खाया तो हमने आप पर नमाज और जिक्र इलाही को बोझल कर दिया. Many times, this is the prophet of Allah, he ate to your full, by which we're able to make you feel the burden of salah and dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. They are ma'soom, and yet they felt the burden of salah and dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So आपने फरमाया उसके अलावा, is there anything besides this? उसने कहा और कुछ नहीं, there's nothing else for you. Sayyidina Yahya alayhi salam. तो आपने फरमाया, लिल्लाहि अलैया अल्ला अमला बतनी मिन तआमिन अबदन. And he said, by Allah, अल्लाह की कसम, कि अल्लाह ताला के लिए मुझ पर लाजिम है कि मैं आइंदा कभी भी खाने से पेट ना भरूंगा. From this day onwards, I will never fill my stomach with food. And then Iblis बोला, वलिल्लाहि अलैया अल्ला अस्नअ मुस्लिमन और अंसह मुस्लिमन अबदन. और अल्लाह ही के लिए मुझ पर भी लाजिम है कि आइंदा किसी मुसलमान को नसीहत ना करूंगा. Yes, this is Prophet of Allah. And as mentioned right at the beginning, Imam Ghazali radiallahu ta'ala said that the origin of all shahawat and all lusts and haram desires comes to this one organ of our body, which is our stomach, the size of our fist. You fill your stomach and you see yourself drifting away from deen. You control this, then Allah will give you the courage to be steadfast on deen. And there's a very beautiful hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rather, before I mention the hadith, Sayyidina Sidi Saqati radiallahu ta'ala, great Gnostic of Allah subhanahu wa ta'ala, he says कि बाज़ मशाइख के बारे में बयान फरमाते हैं. He will mention about his teachers
his spiritual grandmasters, फरमाते कि वो सुत्तू या सित्तू खाते थे, meaning they would break bread, they would mix it water, and they would gulp, they would eat the bread in a liquid form. उनसे उसके बारे में पूछा गया, so they were asked, why do you grind the roti, the bread, mix it water, and then drink it like that? What is the reason behind this? पूछा गया तो उन्होंने इशारा फरमाया, मैंने रोटी चबाने और ये सित्तू खाने के दरमियान 70 तस्बीहात का फर्क पाया है. Yes, meaning the amount of time it takes to chew my roti and to swallow it, I could easily do tasbih subhanallah 70 times. Yes, in order to not to waste my time in consuming, biting, chewing my food, we grind the bread, mix it with water, and then we swallow it, so that our time is saved, so that we can increase the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes? These are the awliya. Every second, every breath is precious for them. Every second is precious for them. Yes? So he said, he did calculations. Yes? So the amount of time it takes, probably he was eating quarter of bread, half of bread maybe. The amount of time it takes to chew the bread and to swallow it, he could easily do tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala 70 times. And then, Imam Ghazali radiallahu, just to finish off, I'm going to carry on next week. The practical aspect, how can we control our food intake? फरमाते हैं कि खाना कम खाने के सिलसिले में तदरीजन यानी आहिस्ता आहिस्ता रियाजत का रास्ता इख्तियार किया जाए. You should take baby steps. Don't go back after Juma'ah, you know, after Juma'ah, you heard the bayan, I'm not going to eat biryani today. Okay, no dal chawal, no papadums, nothing. No, take it easily upon yourself. Yes, your nafs is like a wild animal. Tame it. Slowly but surely. फरमाते इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला क्योंकि जिस शख्स को ज़्यादा खाने की आदत हो वो फौरन ही कम खाने की तरफ आ जाए तो उसका मिजाज बर्दाश्त ना कर सकेगा. If you have the habit of eating full stomach and then suddenly stop, you won't able to bear this. चुनांचे अपने नफ्स का ख्याल रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कमी करे. मसला he gives an example. अगर वो एक दिन में not one meal, one day, अगर वो एक दिन में 3 रोटियां खाता है तो हर रोज रोटी का 30वां हिस्सा कम करे. If you have the habit of eating 3 rotis, Ji Usman, if you have a habit of eating 3 rotis, maybe 6 for many of you, subhanallah, then decrease by 1/3 of that roti. Yes? So eat 2 rotis and 2/3. 1/3 leave it for others to eat. And then once you are habitual upon this, and then decrease another 1/3, a week after another 1/3, until you come to 1 roti. If you suddenly from 6 rotis come to 1 roti, you won't able to manage this. It's a gradual process. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq.